Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on literary criticism and today we will talk about Horace as a critic. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Vrishti Mukherjee. I have qualified NDA UGC NET exam in English literature 4 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 2 years of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. Good evening Rajkishore, good evening Ektaba, good evening Pooja and Elena. Welcome. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. These are the timings of your classes Monday to Friday at 8:30 p.m. Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notified. Okay, so let's start. Today we will talk about Horace as a critic. Horace, as you all know, he was a part of classical criticism. In yesterday's class, we have talked about a new classical critic, that is Samuel Johnson's preface to Shakespeare. And in today's class, we will talk about Horace's Ars Poetica. So let's start. First of all, a brief biographical details of Horace. Horace का timeline है 65 BC to 8 BC. Horace's timeline is 65 BC to 8 BC. So, होरेस का पूरा नाम क्या है? क्विंटस होरेशियस फ्लैकस. Quintus Horatius Flaccus. Normally we call him Horace. And he was world's first autobiographer. This is very important. World's first autobiographer was Horace. He lived during the reign of Augustus Caesar. You all know Augustus Caesar's reign was considered as the golden age. And in the name of Augustus Caesar, we call 18th century or the age of Pope as Augustan age. अच्छा, जून 2023 की डेट्स भी अनाउंस हो चुके हैं. ओके, दैट्स ग्रेट थिंग. तो एक बार फरवरी में एग्जाम होगा, एक बार जून में होगा, मतलब बहुत ही कम टाइम में. तो यस, इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. जो फरवरी का एग्जाम नहीं दे पा रहे हो, यू कैन प्रिपेयर फॉर जून. एब्सोल्युटली. गुड इवनिंग वेदव्यास जी, वेलकम. Okay, so his full name was Quintus Horatius Flaccus. He was the first autobiographer of the world, and he lived during the reign of Augustus Caesar. He born on 8th December 65 BC in Italy. He studied in the academy. Academy, you all know, the school founded by Plato. So academy में उन्होंने पढ़ाई की थी, and his major works are satires, epodes, epistles, and ars poetica. So biographical details उतना ज्यादा important नहीं है. I'm just telling for your knowledge. So Ars Poetica, we will talk about that in today's class. It is the most important critical work of Horace. And ये ज्यादातर syllabus में भी होता है colleges, universities में Ars Poetica. So very importantly, he has laid down some of the major features of poetry, how a poetry should be written, what should be the qualities of an ideal poet. We will talk about all that. Okay. तो चलो start करते हैं. First, अच्छा, Ars Poetica का एक brief introduction. Ars Poetica, the title means the art of poetry. Yes, you can automatically understand that. This is important. It was translated into English by Ben Jonson. Ben Jonson has translated Ars Poetica into English. This is a very important thing. And Ben Jonson made the translation later, but the first translation was made by Thomas Drant. तो ये भी याद रखना, लेसर नोन नेम बट इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए. फर्स्ट ट्रांसलेशन वाज डन बाय थॉमस ड्रैंट. These are the basic details about Ars Poetica. Now the total work Ars Poetica is divided into 3 parts: poesis, poema and poeta. इन तीनों पार्ट्स में क्या बताए गए हैं होरेस के द्वारा, वो हम डिस्कस करेंगे. सो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: पोएसिस, पोएमा, पोएटा. यस, आर्ट ऑफ पोएट्री.
art of poetry. That is the title, that is the meaning, English meaning of the title, arts poetry. Okay, so these are just information. Now we will come on to the main point. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पोएट्री के बारे में क्या बताया, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट्री एंड आइडियल पोएट्री. So according to Horace, poetry is not an imitation but a creative process. Its purpose is both delight and instruct. Obviously it is true. And delight and instruct के बारे में सिडनी ने भी बात किया था. In a much later age, in Apology for Poetry, we have already read Apology for Poetry in this channel. तो सिडनी एज ए क्रिटिक मैंने एक वीडियो बनाया था, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो देख सकते हो इन द प्लेलिस्ट ऑफ लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म. इट इज अवेलेबल. So Sidney has also said the same thing, that the main purpose of poetry should be to delight and instruct. Both educational purpose and entertainment purpose दोनों ही होना चाहिए in poetry. And Aristotle ने जो बताया था कि poetry is an imitation, and Plato has also criticized poetry because it is thrice removed from reality. Here, Horace is completely denying that idea. Horace is saying that poetry is not imitation, poetry is creativity. If the person is creative, if anyone can be creative, then he or she can be a good poet. So, for becoming a good poet, this is your first quality to become creative. तो इमिटेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है. अकॉर्डिंग टू होरेस, इमिटेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. इमिटेशन मीन्स which is some lesser known art form, or which is a very lower grade art form. But when you talk about creativity, it is automatically much higher. Good evening, Papri, welcome. So when you talk about creativity, then it will automatically be much higher. So creative नेस के साथ पोएट्री एसोसिएटेड है, नॉट विथ इमिटेशन. एंड द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री शुड बी टू डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ गुड पोएट्री मीन्स मेकिंग समथिंग न्यू आउट ऑफ ओल्ड. तो हियर इसके साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं द आइडिया ऑफ टी.एस. एलियट, जो बहुत ही बाद में टी.एस. एलियट ने लिखा था, इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट. Remember, we have also done T.S. Eliot as a critic. So in tradition and individual talent, T.S. Eliot is saying that the relationship between tradition and individual talent, it is reciprocal. So individual talent, or the modern generation or younger generation, should not disregard tradition, but they must be respectful to the tradition. At the same time, they should modify or alter it in a new way. And tradition, which is based on some age old customs or the rituals, tradition should also respect the newer ideas of the individual talent. तो दोनों ही एक दूसरे के साथ मॉडिफाई होता है. पास्ट इज ऑल्सो मॉडिफाइड एंड प्रेजेंट इज ऑल्सो गाइडेड बाय द पास्ट. तो देखो, सिमिलर बात होरेस ने भी कहा था बहुत साल पहले कि गुड पोएट्री मीन्स समथिंग न्यू, मेकिंग समथिंग न्यू आउट ऑफ ओल्ड, which means you should not disregard the tradition. Absolutely, Horace was a classical critic. तो obviously Horace तो ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि भाई आप ट्रेडिशन को नकार दो. तो Horace ने ये बताया था कि ट्रेडिशन मस्ट बी रेस्पेक्टेड. द age old beliefs, the rituals, and also the ancient things, classical things, they must be respected, and the poet must try to make something new out of old. मतलब आपको, आप एक ओल्ड चीज के ऊपर बिलीव करके जब आप पोएम लिख रहे हो, आपका इंटरप्रिटेशन नया होना चाहिए. तो सेम वे जो टी.एस. एलियट ने बताया. ठीक है, हाँ. पर्पल पैच समझ में नहीं आया. अच्छा ठीक है, चलो मैं समझा देती हूँ, नो प्रॉब्लम. Johnson also talked about profit and delight. Yes, yes, right, Papri. That was regarding his magazine Rambler. Yes, absolutely right. It was about prose, but automatically you can say that. ओके, अच्छा पीजी सिलेबस में है. अच्छा चलो, हमारे भी पीजी सिलेबस में था. ठीक है, मैं समझा देती हूँ पर्पल पैच.
हाँ, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्पल पैच इन पोएट्री। तो पैच का मतलब क्या है? पैच मीन्स अ काइंड ऑफ मार्क ऑन समथिंग, एंड पैच हमेशा अच्छा नहीं होता। ठीक है, अगर आपके एक व्हाइट ड्रेस में कोई पैच पड़ जाए तो इट विल बी वेरी बैड, इट विल लुक बैड एंड योर व्हाइट ड्रेस विल बी डैमेज। तो पैच मीन्स अगर बॉडी के किसी भी जगह में कोई पैच है तो हमारे बॉडीली ब्यूटी डिस्ट्रॉय हो सकता है, राइट? तो पैच ऑलवेज एसोसिएटेड विथ समथिंग दैट इज बैड, something that is bad, or something which can mar your beauty, the mm, mar anything that is perfect, तो उसमें पैच आ। अब देखो पर्पल पैच, तो होरेस कह रहा है कि इट इज अ फ्लॉ इन गुड पोएट्री। पोएट्री तो अच्छा है बट उसमें एक पैच है, पर्पल पैच है। अब पर्पल कलर उन्होंने यूज किया है टू आइडेंटिफाई और टू एनालाइज इट इन अ मोर डीपर वे। ठीक है, बिकॉज देखो पैच अगर लाइट होता है तो वी कैन ऑटोमेटिकली ओवरलुक इट, बट इफ द कलर ऑफ पैच इज वेरी डीप देन इट इज नॉट सो इजी टू ओवरकम, राइट? चाहे वो पैच कोई भी जगह में। बेसिकली मैं ड्रेस की ही बात कर रही हूँ, तो ड्रेस में अगर कोई पर्पल पैच है या फिर कोई ब्लैक पैच हो गया है आपके व्हाइट ड्रेस में, तो उसको हटाना मुश्किल। अगर कोई थोड़ा बहुत आपका मार्क इधर उधर है तो आप उनको ओवरलुक कर सकते हो, बट यू कैनॉट ओवरलुक अ पर्पल पैच और अ ब्लैक पैच और एनी काइंड ऑफ रेड पैच ऑन अ व्हाइट ड्रेस, राइट? तो वही बात है पर्पल पैच, इट इज अ फ्लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड इट इज अ फ्लॉ इन गुड पोएट्री। Now, what is purple patch? It refers to a brilliant passage in the midst of some mediocre composition. ठीक है? It is characterized by excessive use of adjectives, adverbs, and metaphors. It breaks the flow of narration, and it is full of melodrama. अब देखो इसमें फॉल्ट क्या है। तो होरेस कह रहा है कि if you talk about something very brilliant in a mediocre composition, मतलब पोएट्री उतना खास नहीं है बट उसमें आप एक बहुत अच्छा पैसेज इंक्लूड करते हो, देन ऑटोमेटिकली इट विल बी ए फ्लॉ। अब आप इससे समझो कि एक एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में एक आंसर लिख रहे हो, 10 मार्क्स का एक ब्रॉड नोट आप लिख रहे हो, तो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लेकिन आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, तो आपको तो जो थोड़ा बहुत इधर उधर से लग रहा है वो आपने लिख दिया इंट्रोडक्शन में, एंड इन द मिडिल ऑफ द आंसर यू हैव कॉपीड अ वेरी गुड कोटेशन फ्रॉम एनी पर्टिकुलर बुक और फ्रॉम योर फ्रेंड्स कॉपी। आपने किसी भी तरीके से देखकर एक बहुत अच्छा कोटेशन आपने लिखा, and you are thinking that okay, I will get the full marks because I have written this quotation from the notebook of a first boy or from the notebook of a very reputed publisher, so it must be correct। अब जब एग्जामिनर आपके आंसर स्क्रिप्ट को इवेल्युएट कर रहे हैं तो क्या वो उसमें आपको मार्क्स देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा, because he can easily understand, he or she can easily understand that you have copied this line from somewhere, otherwise you don't have that much ability to remember that critical comment and to write it, because the rest of the notes are gibberish, only that particular comment is highlighted। तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर ये समझ जाएंगे कि ये आपने कॉपी किया, एंड जो भी आप वो सोच रहे थे 1-2 मार्क्स आपको दे दिया जाए, वो सीधा कटकर उनमें से 0 लगा। अब ये क्या हुआ, आपने तो एक ब्रिलियंट पैसेज इंक्लूड कर दिया बट द होल कंपोजिशन इज मीडियोकर, तो उसमें आप जितने भी ब्रिलियंट लाइंस डालो वो फ्लॉ ही तरीके से ट्रीट होगा, राइट? इट मस्ट बी ट्रीटेड एज फ्लॉ। तो वही बात है पर्पल पैच की, इन अ मीडियोकर कंपोजिशन इफ यू इंक्लूड समथिंग दैट इज वेरी ब्रिलियंट, समथिंग दैट इज वेरी ग्लोरियस, a very beautiful flamboyant line you have included, then it will automatically be a flaw because it will be a sheer mismatch with your overall composition।
एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने ये बताया है कि यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, मेटाफोर्स आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो अचानक इन द बिगिनिंग ऑफ इन द मिडिल ऑफ सम मीडियोकर टेक्स्ट, and automatically it will be more ridiculous, it will be melodramatic, and it will break the flow of narration. एब्सोल्युटली आप एक चीज बताते बताते अगर बहुत डिफिकल्ट कोई चीज यूज कर रहे हो तो उसमें नरेशन का फ्लो ब्रेक होगा. So this is a purple patch according to Horace, and this should not be done. In good poetry, this should not be done. If you are writing an ideal poetry, then you must choose a high class language, and you must continue it throughout the end of the line. बट इफ यू लेफ्ट इट इन द मिडल एंड बीच में आप कोई मीडियोकर्स लाइन डाल देते हो, फिर से आप एक वाइब्रेंट लाइंस डालते हो, एक ब्रिलियंट पैसेज आप इंक्लूड करते हो, तो उसमें कोई काम नहीं होगा. द इंप्रेशन विल बी ऑल द मोर बैड. ओके, गुड इवनिंग Tarani. Yes, welcome. Unnecessary paragraph in flowing text. Yes, very good, Ektava. You have summed it up in a very single line. Unnecessary paragraph in a flowing text. Absolutely correct. Acha, Priya, I hope this is now clear to you. Um, I hope this is now clear to you. Okay. So this is about purple patch. मैंने जो example दिया आपको from your exam paper वो याद रखना. तो I hope आप कभी नहीं भूल जाओगे what is purple patch. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इन होरेसियस आर्ट्स पोएटिका. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हिच आई एम सेइंग इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, इट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पोएट्री एंड द डूज एंड डोंट्स ऑफ एन आइडियल पोएट. ओके, तो हाँ, चलो नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन, सॉरी, पॉइंट नंबर 4 पर. लैंग्वेज कैसा होगा. देखो, लैंग्वेज के ऊपर कई सारे क्रिटिक ने बहुत सारी बात कहा है. वर्ड्सवर्थ इज टॉकिंग अबाउट द नेचुरलिटी ऑफ लैंग्वेज. कोलरिज ने भी बताया था कि सुपर नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से लैंग्वेज होना चाहिए. Sidney has also emphasized on language, and here Horace is also talking about language of poetry. But Horace is not Wordsworth. ठीक है, Horace is a classical writer, classical critic. तो होरेस का ये मानना है कि लैंग्वेज ऑफ पोएट्री मस्ट बी द लैंग्वेज हायर देन कॉमन मैन. आम आदमी जिस टाइप से बात करते हैं उस पैसेज से आप पोएट्री नहीं लिख सकते. द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री मस्ट बी अबव द एवरेज, because it is an example or it is a kind of platform to show your creativity. So you cannot apply very mediocre things here. You must learn to defamiliarize, and on the basis of this these ideas, not only this particular thing, these ideas, Sklodowsky has developed the concept of defamiliarization in a much later age. हम रासियन फॉर्मेलिज्म में तो हम मिलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेमिलियराइजेशन, बट इट इज द बेस. हम क्लासिकल क्रिटिक्स की बात करते हैं, इसलिए हम देखो कहते हैं कि क्लासिकल लिटरेचर इज इंपॉर्टेंट, क्लासिकल क्रिटिसिज्म इज इंपॉर्टेंट, because these are the base over which many new critics, many other poets, they have developed their own ideas, own perceptions regarding poetry. अच्छा, ओके. तो अच्छा, पूजा इज फ्रॉम विद्यासागर यूनिवर्सिटी. ओके, थर्ड सेम. So must be the language higher than common man. A poet can coin new words, but the words should not be too difficult to interpret. Remember हम कल की क्लास में बात कर रहे थे Johnson's idea about quibbles. Johnson has also said the same thing, that Shakespeare is a genius, but in some of his plays he has used some very difficult words, some newly coined words which often confuse the reader. So his extreme fascination for quibbles and conceits is a great flaw. तो यहाँ पर भी देखो होरेस वही बात कह रहे हैं कि आप न्यू वर्ड्स यूज तो कर सकते हो एज अ पोएट, बट इट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट. आपने ऐसा ही लिख दिया कि कोई भी रीडर को समझ में नहीं आ रहे, देन इट विल ऑल्सो बी योर फ्लॉ, that you have written such a poem which none of the reader can even interpret properly. So it is your failure, right?
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पोएट्री शुड स्टार्ट विथ इन मीडियस रेस। हमने ये पढ़ा था इन एज अ फीचर ऑफ एपिक पोएट्री, बट होरेस इज सेइंग दैट इन एवरी पोएट्री we must say that in medias res is in medias res should be emphasized in the middle of things. This technique helps the audience to look into the plot with curiosity. ठीक है, तो इन मीडियस रेस्ट बिगिनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड नॉट ओनली इन एपिक पोएट्री बट इन एवरी पोएट्री. Horace is saying that an ideal poetry should begin in medias res, otherwise it cannot arrest the attention of the audience. एंड लास्ट नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया, एपिक मस्ट बी रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. दिस इज अ फिक्स्ड मीटर ऑफ एन एपिक. तो इससे बाहर आपको नहीं जाना है, आपको आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखना है if you are writing an epic. Yes, Paradise Lost is an example. Very good, Paradise Lost is an example. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, art pictura poesis. It is a Latin word. It means as in painting, so in poetry. इसका मीनिंग क्या है? Horace is saying that poetry is like a speaking picture. Poetry is like a speaking picture. The poet must know how to paint with words. So the poet must be a good painter. Art pictura poesis, ये जो Latin phrase, it is not a word actually, it is a phrase. तो जो phrase होरेस ने यूज किया है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि poet should not be a poet. Poet must be an instructor. Poet must be an entertainer. At the same time, poet must be a painter. He or she has no painting brushes, no colors to paint, no canvas to paint, but he or she should imagine that the page on which he or she is writing is a canvas, and he or she must paint with words. So words will serve as a part of painting brush. ठीक है, तो पोएट्री में मतलब ये पेंटिंग के बाद कहाँ से आई कि whenever you are describing something, आपको डिस्क्राइब ऐसे करना है ताकि व्हेन द रीडर इज रीडिंग द पोएम इन एनी सिचुएशन इन एनी टाइम, द रीडर कैन विजुअलाइज द डिस्क्रिप्शन. फॉर एग्जांपल, you are reading some kind of war poetry. You are reading war poetry, specifically the war poetry of Wilfred Owen or Siegfried Sassoon. आप सबने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में कोई ना कोई पोएट्री. So these poetry are a very good example of art pictura poesis. Because जो description दिया है विल्फ्रेड ओवन ने या फिर सिगफ्रीड ससून ने about the futility of war, about the destruction of younger generation, younger young soldiers, and how it is a great politics to join in the department of army in any country. तो ये जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है, these are very vivid and lively. Whenever you will read the poem after so long time, आपको ऑटोमेटिकली वही इमेज याद आएगा जो हम आंखों के सामने देख. तो विल्फ्रेड ओवन is a very successful poet in the line of Horace's thinking, because he has successfully painted the pain of the soldiers with words, and we can feel the pain inside. We can visualize it, that a soldier is dying. A brilliant example is Owen's poem Dulce at Decorum Est. तो हमारे सिलेबस में था, अगर आपको कभी टाइम मिले तो पढ़ लेना. इट इज अ ब्रिलियंट वॉर पोएम, एंड इन दिस पोएम एक्चुअली विल्फ्रेड ओवन इज पिक्चराइजिंग द attack of chlorine gas on the army, on the soldiers, and how one soldier has failed to prevent this attack. Actually, he has failed to wear the gas mask on time. अचानक एक गैस का सेल आ गया एंड वो मास्क नहीं पहन पाए, and how he dies very pathetically. All the other soldiers, they are looking at him, but they are very helpless, and this person has to die because chlorine gas has a very poisonous. So what was his condition? Wilfred Owen has vividly described it. So this kind of poetry can be an example of art pictura poesis, where poet paints with words, and it is not an easy thing.
right? Wordsworth is also a very good example of that. Coleridge's poetry is also an example of that. We can visualize what they have written. Even the other romantic poets also, Shelley and Keats, we can visualize it. तो अगर ये काम हम कर सकते हैं, then the poet is successful. Hyperion is also an example. The same thing is echoed in the poetry of Imagist movement. Absolutely right, Papri. Futility is also a very beautiful poem. Futility हमने school level में पढ़ा था. In class 11, I think, futility. So this kind of poems are very much vivid with imagery. So actually, Horace is talking about the use of imagery here. उनको ही इसी point को उन्होंने बताया है as art pictura poesis. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं. एज ही वाज अ क्लासिसिस्ट, तो वो ये बता रहे हैं कि मीटर एंड स्टाइल ये बहुत जरूरी है. मीटर एंड स्टाइल ऑफ द पोएम मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू द थीम एंड कैरेक्टर, थीम एंड प्लॉट. तो मीटर एंड स्टाइल आपको उसी हिसाब से चूज करना है जो आपके पोएट्री का टॉपिक है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. अ पोएम मस्ट हैव एन यूनिटी इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट एंड डिक्शन. तो वही बात है कि जैसे मीटर एंड स्टाइल के बीच में कोहेरेंस होना जरूरी है, वैसे ही व्हेन यू आर राइटिंग अ पोएट्री यू मस्ट हैव एन यूनिटी. जैसे ड्रामा में यूनिटी होता है, वैसे पोएट्री में भी यूनिटी होना चाहिए. एंड द सब्जेक्ट एंड द डिक्शन एंड द वर्ड्स विच यू आर यूजिंग, they should have a balanced effect and they should create a unity. Okay. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब देखो वो ड्रामा की बारे में बता. अब तक हमने बताया द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट्री. देन वी टॉक अबाउट द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामा. तो हर पोएट मतलब आर्ट ऑफ पोएट्री और पोएटिक्स में जितने भी वर्क, क्रिटिकल वर्क्स हम देखते हैं रिलेटेड टू द आर्ट ऑफ पोएट्री, वी फाइंड द रेफरेंस ऑफ ड्रामा. देखो एरिस्टोटल ने भी पोएटिक्स लिखा, बट उन्होंने भी ड्रामा के बारे में बताया. सिडनी इन एपोलॉजी फॉर पोएट्री हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट ड्रामा. तो ड्रामा के साथ पोएट्री का क्या कनेक्शन है? बिकॉज एट दैट टाइम पोएटिक ड्रामा वाज वेरी पॉपुलर. ड्रामा वाज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री. इसलिए देखो पोएट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ड्रामा के कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते. अच्छा, तो ड्रामा में उन्होंने क्या बताया? होरेस ने बताया है कि एन आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा should have 5 acts and should not have more than 3 characters in a scene. He is very strict. He is very strict. He was a classical critic. तो वो एकदम स्ट्रिक्टली ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम 3 characters must be there in a scene, but more than 3 characters are not allowed in a particular scene. And the whole drama must be divided into 5 acts. जो 1 act 2 act ट्रेजेडी हम देखते हैं मॉडर्न एज में, वो होरेस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था. मतलब होरेस अगर उस टाइम में जीवित रहे थे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर. उनका ये मानना है कि जो भी प्लेस आप लिख रहे हो उसमें 5 एक्ट होना ही चाहिए. किसी भी तरीके से आपको 5 एक्ट में ही डिवाइड करना. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ड्यू एक्स मशीना. ये टर्म आप सबने सुना होगा. वी ऑफन allude it while reading any drama. So deus ex machina means God from the machine. Exact literal meaning यही है, God from the machine. So basically क्या है? It is not a machine, rather it is a device of the plot where an unresolved issue is miraculously solved with divine intervention. It must be used when it is absolutely necessary. ठीक है? तो ड्यू एक्स मशीना क्या है? ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस है जिससे क्या होता है कि when something improbable has occurred or when something improbable is going to happen, there is nothing to control the situation, then God arrives to help the hero. हमने देखा क्लासिकल ड्रामा में ये होता था. जो भी एंशियंट ड्रामा है, जो भी रिलीजियस ड्रामा है, उसमें गॉड का एक बहुत बड़ा रोल है. तब गॉड कहाँ से आए? गॉड तो स्टेज के बैक स्टेज से वो चलकर नहीं आ सकते, बिकॉज ही इज गॉड एंड वी ऑल हैव द बिलीव दैट गॉड लिव्स इन हेवन. मतलब वो तो ऊपर है, तो ऊपर से वो कैसे आएगा? द रोल ऑफ गॉड इज प्लेड बाय अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, सो हाउ कैन ही जंप फ्रॉम द टॉप? ये भी एक अनरियलिस्टिक लगेगा.
तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए ऑडियंस को, दिस पर्टिकुलर type or you may say this particular medium has been evolved by Horace. तो इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर डिवाइस के साथ गॉड्स को ऊपर से नीचे लाया जाता है धीरे धीरे, ताकि ऐसा बिल्कुल भी ना लगे ऑडियंस को कि ये भाई एक मेड अप चीज है। इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। एंड द गॉड अराइव्स एट दैट पर्टिकुलर प्लेस व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन। When there is no solution, everything is going to be distracted or destroyed, then God appears and everything becomes very happy and peaceful. तो ये बात है ड्यू एक्स मशीना। it must be used when it is absolutely necessary। अब ये बात भी सही है, आप हमेशा गॉड को ऊपर से नहीं बुला सकते, बिकॉज इट विल हैम्पर हिज और हर प्रेस्टीज। गॉड इज समथिंग विच इज अनअटेनेबल। हम ये बिलीव करते हैं कि गॉड सबके सामने नहीं आते हैं, वो उसी के सामने आते हैं जो उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जो बहुत ही एक अच्छा डिवोटी है, उसके पास गॉड आता। अब अगर कोई भी सिचुएशन में आप गॉड को ऊपर से ला कर दो, तो इट विल हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस दैट ओ गॉड इज नथिंग वेरी सीरियस। But to maintain that seriousness, you can only use it when it is absolutely necessary। जब गॉड के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, तब भी आप गॉड को ऊपर से लाना, अदरवाइज यू शुड अवॉइड इट। यू एक्स मशीन। Yes, absolutely, Bapu. Very good. Very good. Lord Ram worshipped Ma Durga and received her blessing before his war with Ravan in Ramayana. Absolutely. It is a divine intervention. Yes. As in Rape of the Lock, there are lots of angels. They protect Belinda and also went to Cave of Spleen. Hmm. This is yes, you can call it a divine intervention, Elena, but it has been done in a very mocking way। ठीक है, इसमें हाँ डिवाइन इंटरवेंशन तो है, एंजल्स आर पार्ट ऑफ हेवन एंड एंजल्स आर क्लोजर टू गॉड, बट इसमें इसको मॉक किया गया बाई पोप। पोप ने डेलिबरेटली इस्तेमाल किया है कि हर काम में एंजल्स तैयार है बेलिंदा के लिए। इसका मतलब ये है कि he is trying to satirize the contemporary vanity and the extreme pride of women on their beauty, extreme beauty conscious। इसको वो सैटराइज कर रहे हैं, बट यस यू कैन कॉल इट अ डिवाइन। एब्सोल्युटली राइट। तो ओके, तो ये बात उन्होंने बताया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ राइटर शुड फॉलो द ट्रेडिशन एज इफ ही वांट्स टू राइट समथिंग न्यू। he and if he wants to write something new, he must be consistent। no better guide can we follow than Homer। Horace has a great respect for Homer एंड वो ये बता रहे हैं कि राइटर मस्ट फॉलो द ट्रेडिशन। देखो वही बात जो टी एस एलियट ने कहा है सालों साल बाद, उसी सेम बात होरेस कह रहा है बहुत साल पहले कि राइटर मस्ट फॉलो द ट्रेडिशन एंड व्हेन ही वांट्स टू राइट समथिंग न्यू, देन आल्सो ही शुड हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ पास्ट एंड ही मस्ट बी कंसिस्टेंट इन हिज डिस्क्रिप्शन। जो टी एस एलियट ने क्या बताया था? हिस्टोरिकल सेंस। देखो क्लासिकल क्रिटिसिज्म ना ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें याद रहेगी। तो टी एस एलियट की बात करो, सैमुअल जॉनसन की बात करो, दे आर ऑल क्लासिकल, फिलिप सिडनी, दे आर ऑल क्लासिकल क्रिटिक्स। तो इनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज है उसमें आप थोड़ा सा सिमिलैरिटीज आपको मिलेगा। देखो सेम बात टी एस एलियट ने बहुत साल बाद कहा है, बट होरेस ने बहुत साल पहले ऑलरेडी ये कह दिया। A writer should follow the tradition, and if he wants to write something new, so writing something new does not mean that you should disregard the tradition, rather you must be consistent। consistent of what? Consistent of following the tradition, of modifying it, and that is historical sense। and वो कह रहे हैं कि इसमें सबसे अच्छा जो गुरु है हम सबका, वो है होमर। Homer is an ideal poet whom we all should follow, according to Horace। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बताया है
बहुत ही नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ आर्ट्स पोएटिका, ये तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आई हैव आल्सो मेंशन्ड इट इन माय प्रीवियस क्लासेस. A writer should wait for at least 10 years before publishing a poem. This is a very brilliant thing which Horace has said. ठीक है, and very shocking also. आपने आज एक पोएम लिखा on 30th December 2022, 10 साल बाद आपको ये पब्लिश करना. ऐसा क्यों कहा है होरेस ने? होरेस ये बता रहे हैं कि if you are writing something, you must think um, of the importance and also the relevance, also the relevance of the poetry in modern world. तो पोएट्री का पर्पस अगर है टू टीच एंड डिलाइट, टू टीच मैं ले रही हूँ, डिलाइट तो वैसे भी होगा, पोएट्री का पर्पस है टू टीच. अब टीचर अगर कोई बैकडेटेड चीज आपको बताए तो यू विल नॉट फील इंटरेस्टेड इन इट. टीचर्स मस्ट बी अपडेटेड. आपने टीचिंग एप्टीट्यूड ने भी पढ़ा है कि टीचर्स को अपडेटेड रहना है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है. इसलिए देखो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में. तो वो तो फैकल्टी बन चुका है, उसके डेवलपमेंट की क्या जरूरत, right? They have studied everything, they are the masters of their subject, they have done doctorates also. So what is the need of faculty development program? तो इसका नीड ये है, रिफ्रेशर कोर्सेज, ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो भी है, इसका पर्पस ये है कि फैकल्टी तो वो बन गया, चलो ठीक है, उनके पास क्वालिफिकेशंस है, बट दे मस्ट कीप देमसेल्व्स अपडेटेड. जितने दिन तक वो टीचिंग प्रोफेशन में रहेगा उतने दिन तक उनको अपडेटेड रहना. एज ओल्ड टीचिंग टेक्निक्स आप यूज नहीं कर सकते. मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ आपको अपने आप को भी मॉडर्नाइज करना. इसलिए तो इतना ट्रेनिंग होते हैं टीचर्स को. टीचर को भी पढ़ना होता है, टीचर को भी ट्रेनिंग लेना होता है. इसका पर्पस ये है कि आपको रेलिवेंट रहना. इफ यू आर सेइंग समथिंग एज ओल्ड थिंग्स years after years, then after a few years students will lose interest and they will just reject you as a teacher, right? तो वही बात होरेस कह रहा है कि पोएट इज अ टीचर. तो पोएट ने आज एक लिख दिया पोएट्री, उनको 10 साल वेट करना जस्ट टू टेस्ट द रेलिवेंस ऑफ. if it is relevant after 10 years, then it should be published, otherwise it should be rejected. बिकॉज अगर आपके पास रेलिवेंसी नहीं है, आपके राइटिंग्स का कोई क्लासिकल, कोई टाइमलेस वैल्यू नहीं है, तो आप उनको पब्लिश ही नहीं कर सकते. पुरेस कह रहा है कि सारे पोएट्री को, आइडियल पोएट्री को कॉन्टेक्सचुअलाइज करना है, एंड उनके कॉन्टेक्स्ट मतलब हर जगह में, हर सेगमेंट में वो रेलिवेंट होना चाहिए इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. In 2022 it should be relevant, and also in 2052 उसमें भी इसका रेलिवेंट इक्वली रहेगा. तब हम कहेंगे कि इट इज अ क्लासिकल राइटिंग और द पोएट इज अ क्लासिक पोएट. Okay, yes Papri, I will just tell you. So a writer should wait for at least 10 years before publishing a poem. Horace is saying that you must understand the relevance of your writing. अगर उनका कोई रेलिवेंस नहीं है, अगर वो 10 साल के बाद बैकडेटेड हो जाते हैं, तो आप उनको पब्लिश नहीं कर सकते. दैट शुड नॉट बी अ क्लासिक. ओके, so Papri is saying that in which sense Eliot used tradition in the essay Tradition and the Individual Talent. देखो, इसमें जो ओपनिंग लाइंस है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का, in the opening lines T.S. Eliot is saying that we often use tradition in a very narrower sense. In the opening paragraph of the essay, Eliot is saying that in normal human life, the common people like us, we use tradition in a very negative sense and we apply individual talent in a more better way. देखो, the word tradition is very important, बट हम कितने कैजुअली इसको यूज करते हैं कि आप बहुत ट्रेडिशनल हो. मतलब ट्रेडिशनल हो मतलब यू आर मस्ट बैकडेटेड. ठीक है, यू आर मोस्टली बैकडेटेड, यू आर एज ओल्ड, यू आर नॉट अपडेटेड. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रेडिशन को यूज करते हैं. बट एलियट इज ट्राइंग टू शो द डिफरेंट यूसेज ऑफ द वर्ड ट्रेडिशन इन अ पॉजिटिव वे. एब्सोल्युटली बीच में उन्होंने नेगेटिव बताया है कि ट्रेडिशन
एक ऐसे आइडिया है जो सोसाइटी में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, बिकॉज वी कंसिडर ट्रेडिशन इज इक्वल टू समथिंग दैट इज कन्वेंशनल, समथिंग दैट इज बैकडेटेड। मतलब ट्रेडिशन का मतलब बैकडेटेड नहीं है। Eliot is trying to say that tradition is a very important thing and we should respect the tradition, otherwise you cannot survive in a particular community or society. So in this essay, Eliot is trying to find out the relationship between tradition and individual talent in a positive way, how tradition can be used in positive way, and how the young generation, the modern generation, they can modify the tradition in a new way so that it should not be backdated, rather it will also be modified with the help of some new idea. ठीक है, तो ये बात उन्होंने बताया है इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, दैट इज द मेन थीम एंड ही हैज गिवन सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ दैट। ओके, थैंक यू सो मच संध्या। ओके, तो दिस इज अबाउट होरेसियस आर्स पोएटिका। ओके, तो ये मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने बताया। अगर आपके पास बुक है आर्स पोएटिका का तो यू कैन ऑल्सो रीड द टेक्स्ट, द मेजर लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट, बट दीज आर द मेजर टर्म्स जो होरेस ने यूज किया। ठीक है, so that is the end of today's class. Thank you all for joining. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And these are the timings of your classes. So we will meet again Monday at 8:30 p.m. in the new year. Okay, so advance happy new year to all of you. We will meet on 2nd January 2023. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. Acha, Pooja is saying to take a class on Indian aesthetics. Okay, okay, I will try to take a class on that. So thank you all. Bye bye everyone. Good night. See you all Monday at 8:30 p.m. in the new year.